मुझे याद जो है ना आप याद करा दें कि रिकॉर्डिंग शुरू करें। So this is the new chapter, this is chapter 10, and the topic is operational amplifiers. So what is operational amplifier? So operational amplifier is a very high gain differential amplifier having very high input impedance and having very low output impedance. So there are several differential amplifiers inside the operational amplifier which are connected in cascade, and you know the idea of the cascading. To enhance the gain, we have multiple amplifier stages and they are connected in such a way that the output of one amplifier is connected as input to the next amplifier and so on. So overall gain is the product of the individual gain. Let's say we have different amplifiers. One amplifier is that one, another amplifier is that one, and so on. Let's say this is the output, input is Vi, the output is V naught. The individual gain, let's say this is AV1, this is AV2, and this is, let's say, AVN. So what is V naught? V naught will be the overall gain, which is the total gain multiplied by Vi. So the overall gain is the product of the individual gains AV1, AV2, and AVN. So in order to get a large gain, what we do, because the individual amplifier does not provide a very large gain, so the solution of the problem is to cascade multiple amplifying stages in order to get the very large gain, and this overall voltage gain is the product of the individual gains of different amplifier stages. Now you understand what's meant by the cascading. तो एक एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो दूसरे एम्पलीफायर के जो नेक्स्ट एम्पलीफायर स्टेज है उसके लिए ये इनपुट काम करेगा. फॉर एग्जांपल दिस इज VI1, so this output is VO1, so this VO1 acts as a VI2 for the second stage. Similarly, this is VO2 and so on. It will become VI3 for the next stage and so on. So this is the way, this is the how we achieve a very large gain. So in operational amplifier, we have multiple differential amplifier stages, and we know that differential amplifier provides a large gain, so multiple stages are connected, so the overall voltage gain of the operational amplifier is the product of these individual gains of the differential amplifier stages. Any question? So operational amplifier consists of differential amplifier
So the fundamental unit of operational amplifier is the differential amplifier. And why it is called differential? The term differential means that it amplifies the difference of the input signal. Input signals, difference of the input signal. That is why it is called differential amplifier. Let's say we apply two input. One is called VI1, the other is called VI2. So the difference of these two signals will be VI1 minus VI2, and this difference signal is amplified. So that is why it is called differential amplifier. So what is operational amplifier? It is a very high gain differential amplifier with very high input impedance, very low output impedance. So there are many applications of the operational amplifier. So what are those applications? Uses of the operational amplifier, for example, they provide voltage amplitude changes, means you can change the amplitude and you can change the polarity from plus to minus, from minus to plus. They can be used as an oscillator, filter circuits, and many types of instrumentation circuits. They can be used as waveform converters. They find their application in ADC, analog to digital converter, and digital to analog converter, and so on. So if you look at the term operational amplifier, why we use the term operational operation? So these operational amplifiers were basically used for performing different mathematical operations or mathematical functions. That is why they were called, or they are called, operational amplifiers. In the past, these operational amplifiers were constructed with the help of vacuum tubes. Later on, they were constructed with solid state devices, means transistors, and they a very complex circuitry. This operational amplifier, very complex circuitry, and they are available in integrated circuit form, IC, integrated circuit form. So what are those? What were those mathematical operations? These mathematical operations were oblique functions. They performed summation, oblique addition, subtraction, integration, and differentiation. So these were the mathematical operations that were performed using operational amplifier. So that is why we use the term operational amplifier. So in the early days, digital computers were not evolved, and these mathematical operations or functions were performed by op-amps. So as already mentioned, I mentioned that operational amplifier consists of differential amplifier stages to achieve very high voltage gain. The basic symbol for operational amplifier, the symbol for operational amplifier plus minus
So it consists of two input 1 and input 2, and this is the output. So this is the basic symbol for operational amplifier. The input terminal marked with the plus sign or the positive sign gives the name to this input terminal non-inverting input. And the input associated with the negative sign give the name to the input terminal as inverting input. सर ये प्लस वाला दोबारा रिपीट कर द इनपुट टर्मिनल मार्क विद प्लस साइन Is तो termed उसके बाद as क्या non-inverting input. And the input terminal marked with the negative sign is referred to as inverting input. इसका मतलब ये है कि अगर आप इनपुट जो है, जो प्लस साइन वाला इनपुट है, इस पे अगर आप सिग्नल अप्लाई करेंगे तो आउटपुट और इनपुट इन फेज होंगे, इसलिए टर्म इस्तेमाल किया है नॉन इन्वर्टिंग, यानी उसमें फेज शिफ्ट नहीं आता, इनपुट और आउटपुट इन फेज होंगे। अगर आप सिग्नल इन्वर्टिंग इनपुट पे देंगे तो आउटपुट और इनपुट जो है ना वो आउट ऑफ फेज होंगे 180 डिग्री से। अभी समझ आ रही दोनों की कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से क्या मतलब है और इन्वर्टिंग इनपुट से क्या मतलब है? यस सर ठीक है ना। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब है अगर आप इस इनपुट पे जो कि उसको पॉजिटिव साइन से शो किया है, अगर इस पे आप इनपुट देंगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट एम्पलीफाइड मिलेगा, आपको एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ द इनपुट, लेकिन दोनों इन फेज होंगे। अभी आगे आएगा, अभी हम स्टडी करेंगे। अगर आप इसी के मतलब है नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आप सिग्नल अप्लाई करेंगे तो इनपुट और आउटपुट जो है ना, आउटपुट तो एम्पलीफाइड होगा लेकिन आउट ऑफ फेज होगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट से। इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो फेज शिफ्ट होगा वो 180 डिग्री का होगा। एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। ठीक है। तो नॉर्मली जो है ना यहाँ पर इसमें जो है पावर सप्लाई हम शो नहीं करते, लेकिन इसमें मतलब बाद ऑपरेशन एम्पलीफायर दो पावर सप्लाई से जो है ना मतलब ऑपरेट करते हैं, उसको जो वोल्टेज सप्लाई चाहिए, बास को जो है ना एक सप्लाई चाहिए, तो मुख्तलिफ जो है ना बाद लिखते हैं प्लस वी, बाद लिखते हैं माइनस वी, या प्लस वी सी सी और माइनस वी सी सी और माइनस वी ई, इस तरह जो है ना। लेकिन ये जो पावर सप्लाई के जो टर्मिनल्स हैं इसको हम शो नहीं करते। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप एक पावर सप्लाई से भी ऑपरेट कर सकते हैं और दो पावर सप्लाई से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो वीसीसी है और माइनस वीसीसी या माइनस वी, दे आर द डीसी पावर सप्लाईज जो कि बाइसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एनी क्वेश्चन? तो ये जो दो पावर सप्लाईज आपको नजर आ रहे हैं ना, दो टर्मिनल प्लस वीसी और माइनस वीसीसी और माइनस वी, बाज़ का जो है ना इस पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस वी और वी माइनस एंड सो ऑन, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपको पावर सप्लाई जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो जो है ना मैक्सिमम जो है ना ज़्यादातर जो है आपके पास ये जो पावर सप्लाईज है उस उनको हम शो नहीं करते, बस सिंपली आप जो बेसिक ऑप एम्प का जो सिंबल है, सिंपली आपके पास ये सिंबल प्लस माइनस V1 V2 और V0, V1 V2 ये इनपुट सिग्नल है आपके पास। लिख दें ना लिख दें, आप सिंपली लिख दें इनपुट 1 और इनपुट 2, और ये आपके पास सिंपली आ जाएगा, आपके पास आउटपुट आ जाएगा, या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट, जो भी आप जो है जिस तरह आप मेंशन करना चाहें, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट, और आपके पास करेस्पॉन्डिंगली इसका ये आउटपुट। So this is the basic op-amp symbol. So there is no need of to show the power supplies. पावर सप्लाई दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है।
लेकिन जो सिग्नल एम्पलीफाई होगा वो इस पावर सप्लाई से आगे नहीं जाएगा, ये याद रखें। अगर हम जो है ना आउटपुट को पावर सप्लाई से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये जो डिवाइस है ये फिर सैचुरेशन मोड में ऑपरेट करेगा। लेट्स सी, अगर आपके पास साइनोसाइडल इनपुट है और आप उसको सैचुरेशन मोड में ले जाने की कोशिश करेंगे तो फिर आउटपुट किस किस्म का हो जाएगा, कोई बताएं। अगर इनपुट एसी है और आप उस ऑप एम्प को सैचुरेशन मोड में ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो आउटपुट किस किस्म का होगा, वो साइनोसाइडल ही रहेगा या कोई और उसका शेप हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। वो जो आपके पास स्क्वायर वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर वेव में। तो ये आपके पास नॉन लीनियर ऑपरेशन है। लीनियर में तो ये होता है ना कि जो इनपुट वेव फॉर्म है वही आउटपुट वेव फॉर्म भी वही होना चाहिए, लीनियर ऑपरेशन है। लेकिन जो आउटपुट है वो लीनियर, वो इनपुट का जो है एम्पलीफाइड वर्जन होता है। नॉन लीनियर में तो उसका अपने जो शेप है वेव फॉर्म का वो जो है ना वो चेंज हुआ। इनपुट साइनोसाइडल था और आउटपुट आपके पास स्क्वायर वेव आ गया। सो दिस इज नॉन लीनियर ऑपरेशन। एनी क्वेश्चन? बात समझ आ रही है? समझ आ रही बात की? यस सर। ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि क्योंकि दो टर्मिनल्स हैं, इनपुट टर्मिनल्स हैं, तो आप या तो दोनों इनपुट पे सिग्नल अप्लाई करें या एक इनपुट टर्मिनल पे सिग्नल अप्लाई करें, दूसरे को ग्राउंड करें। सो दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशंस। मोड्स ऑफ ऑपरेशंस। तो ऑप एम्प को अभी हमने जो रिप्रेजेंट किया है उसको दो इनपुट से और एक आउटपुट से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। सो each input results in either the same or an opposite polarity or phase output, depending on whether the signal is applied to the plus terminal or the minus terminal or minus input terminal, that is non-inverting input or inverting input। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि आप सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं, एक इनपुट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक इनपुट पे सिग्नल अप्लाई करें तो दूसरा इनपुट जो है ना वो उसको आप ग्राउंड करेंगे, या दूसरे पे सिग्नल अप्लाई करें और पहले वाले को ग्राउंड करें, या दोनों इनपुट पे सिग्नल अप्लाई करें। सो अकॉर्डिंगली वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो जो पहला ऑपरेशन है, मोड ऑपरेशन है, उसको हम कहते हैं सिंगल एंडेड इनपुट ऑपरेशन। सिंगल एंडेड input operation। So by single ended input operation means that we are applying
an input signal at one input while the other input terminal is connected to the ground or it is at ground potential. So this mode of operation is called single-ended input operation. तो अगर आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे सिग्नल कनेक्ट करें तो इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड करेंगे, या इन्वर्टिंग इनपुट पे सिग्नल कनेक्ट करें तो फिर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को आप ग्राउंड करेंगे. लेट्स सी. प्लस माइनस, इसको मैंने ग्राउंड किया और यहाँ पर मैं सिग्नल कनेक्ट करता हूँ Vi. अभी देखें, मैंने सिग्नल कनेक्ट किया नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर, तो जो आउटपुट होगा और जो इनपुट होगा वो दोनों इन फेज होंगे. Vi t ये जो V नॉट है तो ये जो है ना, जो V नॉट है आपके पास, ये आउटपुट, जो V नॉट आउटपुट है, ये दोनों इनपुट और आउटपुट इन फेज होंगे, लेकिन इनपुट सिग्नल का जो है ये एम्पलीफाइड वर्जन होगा. ठीक है, समझ आ रही है आपको? यस सर. सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड कर दें और इन्वर्टिंग इनपुट पे हम सिग्नल अप्लाई करें. अच्छा, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम सिग्नल अप्लाई करते हैं, output is the amplified version of the input signal. ये कोई लाइन ड्रा कर रहा है दोबारा. किसने लाइन ड्रा किया? आप में से किसी ने गलती से ड्रा किया है. रेड लाइन नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? रिमूव करें. हाँ हाँ सर, आ रहा है. बस ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम. सर वहाँ से बंद करे ताकि कोई और ना करे. बस मैंने वहाँ से नोटेशन बंद कर दी. जरा स्क्रीन को देखें, इसमें कौन है? सर वो मैं इधर रजिस्टर में लिख रहा था, तो स्क्रीन पे वैसे जब कोई लिखते हैं तो नाम आ जाता है. अच्छा, वो लिख रहा था, नहीं लिख. ये दिखता है मोहम्मद फरहान. आवाज आ रही है? आ रहा है जो भी लिखा हुआ है. आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? ये सर आपकी आ रही है? उसका नेटवर्क इशू है. यस सर. उसका मसला होगा. एनी हाउ, तो ये है वी नॉट और ये, तो ये देखें, जो वी नॉट है, दिस इज द इन्वर्टेड वर्जन बट द एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ द इनपुट सिग्नल. ठीक. अच्छा, ये जो वी नॉट है, ये बराबर होगा आपके पास ए वी आई. ये माइनस ए भी है.
और यहाँ पर जो वी नॉट है वो है ए वी आई, लेकिन नेगेटिव साइन भी साथ आएगा इसके साथ। सर ये दोनों लीनियर है ना, दोनों लीनियर है, यस सर। ठीक है। तो माइनस साइन इसलिए डालता हूँ ताकि आपको पता चले कि वी नॉट और वी आई आउट ऑफ फेज है। गेन एक्चुअली नेगेटिव आएगा आपके पास ना, ये नेगेटिव हो जाएगा गेन। अभी इसमें ये देखें, ये वाला ये जो गेन है, इसमें इस गेन को हम कहते हैं ओपन लूप गेन। यहाँ पर आउटपुट और इनपुट के दरमियान कोई फीडबैक पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसको कहते हैं ओपन लूप गेन। और ये जो ओपन लूप गेन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। इसकी जो रेंज है वो है 10⁵ से लेकर 10⁶ टाइम इस सिग्नल को बढ़ाता है। तो अगर आप मामूली सा भी सिग्नल जो है ना, वेरी माइन्यूट सिग्नल आप अप्लाई करें इनपुट पे, तो आउटपुट पे आपको काफ़ी लार्ज सिग्नल मिलेगा, ठीक। इसकी जो है ना हम वो स्टडी करेंगे वोल्टेज ट्रांसफर कर्व की, वो बाद में देखते हैं जब हम उसके एप्लीकेशन पे जाएंगे। एनी वो चीज़ आप ध्यान में रखें, वो भी हमने डिस्कस करना है। तो what is mean by open loop gain? Open loop gain is the gain of the operational amplifier when there is no feedback from output to the input side. So this is open loop gain. अगर हम आउटपुट और इनपुट के दरमियान कोई फीडबैक पाथ प्रोवाइड कर दें तो फिर वो हमारे पास क्लोज लूप गेन बन जाएगा। और हमारा नॉर्मली जो है ना, हम ऑप एम्प को हम क्लोज लूप में ऑपरेट करते हैं ताकि गेन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं। अभी तो गेन काफ़ी ज़्यादा है ना, 10⁵ से लेकर 10⁶ तक जाता है। तो एक आईसी है जिसको हम कहते हैं 741। अभी चूंकि ये ऑप एम्प है 741 इसका नंबर है, ये काफ़ी जो है ना वो है पॉपुलर आईसी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। और इसको हम जो है ना, इसको प्रैक्टिकली आप जो है ना लैब में आप देखेंगे कि इसके साथ हम किस किस्म के ऑपरेशन जो है ना हम परफॉर्म कर सकते हैं। और ये भी हम देखेंगे कि जो 741 है, ये नंबर जो है ना ये किस तरह इसको जाट हुआ है। 741 हर नंबर का जो है ना एक वो आपको मीनिंग देता है कि 7 से क्या मुराद है, 4 से क्या मुराद है, 1 से क्या मुराद है, ठीक है ना। तो 7 जो है ना वो उसकी फंक्शनलिटी से ताल्लुक है, 4 इसके इनपुट से ताल्लुक है और 1 उसका आउटपुट से ताल्लुक है। तो 7 फंक्शनलिटी हो गए हैं, 4 इनपुट हो गए हैं और 1 जो है ना उसका आउटपुट हो गया। तो इस तरह इस आईसी को जो नाम दिया है उसको हम कहते हैं 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो ओपन लूप गेन है ये रेंज है 10⁵ से लेकर 10⁶ तक, विच इज अ वेरी लार्ज गेन, वोल्टेज गेन। जो नेक्स्ट ऑपरेशन है उसको हम कहते हैं डबल एंडेड इनपुट ऑपरेशन। डबल एंडेड, इसको हम डिफरेंशियल भी कहते हैं। डबल एंडेड और डिफरेंशियल इनपुट ऑपरेशन। नाम से क्लियर है कि अभी आप दोनों इनपुट पे सिग्नल अप्लाई करेंगे।
the signals are applied at each input. Signals are applied at each input. So that is why we use the term double-ended input operation or differential input operation. तो जो अभी पढ़ा है सिंगल एंडेड इनपुट ऑपरेशन में, उसमें एक ही इनपुट पे सिग्नल अप्लाई करते हैं एक टाइम पे, और दूसरा जो इनपुट टर्मिनल है उसको ग्राउंड करते हैं। लेकिन डबल एंडेड इनपुट ऑपरेशन में आप दोनों इनपुट पे सिग्नल अप्लाई करते हैं। सो लेट्स सी, वी अप्लाई सिग्नल बिटवीन टू इनपुट टर्मिनल्स, उसको हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो आउटपुट है उसको हम V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो VD which is the input signal and is applied between the two input terminals. So neither of the input is at ground potential, and the output will be either in phase of the input or out of phase of the input. डिपेंड करेगा, अभी देखते हैं वो किस तरह होगा। So the plus and the input minus inputs. VD is connected between plus and minus inputs, and the same action can be obtained when we apply two separate signals to both inputs. So in this case, the different signal will be equivalently, we apply signal here and we apply signal here. This is VI1, input signal 1, this is VI2, and this is V0. Now this because as I already mentioned that operational amplifiers amplify the difference of the input signal, difference of the input signals. So what is that difference signal? VD is equal to VI1 minus VI2. So V0 is equal to amplifier gain, which is the open loop gain, multiplied by VD, is equal to A VI1 minus VI2. अभी आप बताएं कि ये जो V0 है ये कब इनपुट सिग्नल के इन फेज होगा और कब जो है ना आउट ऑफ फेज होगा। अभी आपको आइडिया तो हो गया। ये सर अगर VI1 is greater than VI2 तो इन फेज होगा। तो अगर आपके पास इन दो के दरमियान जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है उस वोल्टेज को क्या नाम दे दूं, जो इन दो का डिफरेंस को हम कहते हैं VD। VD यहाँ पर अपेयर हो रहा है, तो VD इज इक्वल टू VI1 माइनस VI2। अभी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। V0 टाइम भी खत्म होने वाला है, एनी V0 will be in phase with the input for VI1 greater than VI2. V0 will be out of phase by 180 degree